poem, we are going to read Indian Children Speak by Juanita Bell. Very often we fail to understand each other. This happens especially when we prejudice against each other. To understand that others, we need to develop a positive attitude. How would you react if you are described as just the opposite of what you really are? So, कौन कुहाई पैराग्राफ रे जोनेता वेल्स कौन कही वेरी ऑफेन वी फेल टू अंडरस्टैंड इच अदर तो आम परस्पर मध्य गोटे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूँ निजको न बुझिकी दिस हैपेन्स स्पेशली यहाँ कहीं हुए कहीं आम जितेबाला अन्य विषय रे गोटे खराब इमेज क्रिएट कर गोटे खराब इंप्रेशन क्रिएट कर दे था मन भितर जनक विषय रे सो आमको से पर्सन ऑलरेडी खराब ही लगे हाउएवर गुड द पर्सन मे बी टू अंडरस्टैंड इच अदर तो आम गोटे अन्य लोक को बुझापी कौन करिया दरकार आमर निजर गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हर क्रिएट करिया दरकार हाउ वुड यू रिएक्ट इफ योर इमेज इज थॉट एज टू बी नेगेटिव सो तुमको केमती लगे जड़े जदि तुम विषय खराब भावुची तुम इंप्रेशन जदि भल अच्छी देन ऑल्सो तुमको जड़े जदि खराब भावुची ताले देन तुम रिएक्शन कौन हम नाउ रीड द पोएम बिलो टू सी हाउ द स्पीकर ट्राइज टू क्लियर वन सच मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ सम वाइट पीपल्स अबाउट द रेड इंडियन चिल्ड्रन तो इन द बिलो स्टैंजर्स जतिक सब लिखाई जुआनिता बेल्स कौन ट्राए करुचंती व्हाइट पीपल्स माने जो रेड इंडियंस को विषय रे खराब भावुचंती तांको सी क्लैरिफाई करिया पे चाहउचंती ना लिसन द रेड इंडियन चिल्ड्रंस आर नॉट लाइक व्हाट यू थिंक ऑफ देम सो फर्स्ट स्टैंजा रे कौन लिखाई पीपल सेड इंडियन चिल्ड्रंस आर हार्ड टू टीच डोंट एक्सपेक्ट देम टू टॉक वन डे स्टबी लिटिल बॉय सेड Last night the moon went all the way with me when I went out to walk. So ए स्टैंजा रे कौन कुहा है white peoples माने Indians को विषय कौन कहती that they are hard to teach. Don't expect them to talk. तो से माने को बुझेबा किछि जिंस पढ़ेबा बहुत कष्ट से माने केबे हेले भी बुझंतिनी कि ठीक से अंडरस्टैंड करि पारंतिनी तो तांको केबे कहिबार भाबिबनी से किछि जिंस ठीक रे भी एक्सप्लेन करी कहि पारंतिनी बट जुआनिता वेल्स प्रूव द व्हाइट पीपल्स रॉन्ग बाय सेइंग दैट वन डे स्टबी लिटिल बॉय सेड स्टबी माने हेल्दी बॉय माने शॉर्ट आउ हेल्दी थिक बॉय सो स्टबी लिटिल बॉय सेज लास्ट नाइट द मून वेंट ऑल द वे विथ मी व्हेन आई वेंट आउट टू वॉक तो से स्टबी लिटिल बॉय कौन कहूले से स्टबी लिटिल बॉय कहूले कि सी जितेबाला बाहर को चलिया जाइए गोटे वॉक रे सी देखिले कि मून भी सहित धीरे 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 मूव करुची गोटे मोशन रे चलुची सो थिंक सच अ स्मॉल बॉय इन सच अ स्मॉल एज हिज इमेजिनेशन पावर इज सो इम्प्रूव्ड सो वेल डेवलप्ड एंड द व्हाइट पीपल्स वे थिंकिंग रॉन्ग ऑफ द रेड इंडियन चिल्ड्रन सो Juanita Bell proves it wrong by giving the example of stubby little boy, which is the first number. In the second set, the Indian children are very silent. Their only words are no and yes. But ragged Pansy confided softly, my dress is old, but at night the moon is kind. Then I wear a beautiful moon-colored dress. So, a stanza re कौन लिखा है? इस stanza रे लिखा है कि white people says व्हाइट पीपल माने इंसिस्ट करती कौन ना इंडियन चिल्ड्रन गुरा बहुत साइलेंट दे नेवर स्पीक एट ऑल आ तांको किछि इंग्लिश वर्ड की कहिबा आसेनी बेली कि से माने कौन करती येस आउ नो रे आंसर दियंती सो Juanita Wells proves it wrong by giving it second example of ragged pansy. Ragged pansy कौन? pansy होची गोटे झियो जहाँ पाखरे पिंधिया पे ड्रेस न थाए आ से गोटे ragged माने चिरा फटा धड़ा कपड़ा को पिंधि थाए and she is also grateful to God that she got ragged dress to cover her body. She says मो पाखरे पिंधिया पे नुआ कपड़ा नथले कौन हैला moon is kind मून होचंती बहुत उदार जी डेली नाइट रे
एमिति शाइन करछंती कि मोर व्हाइट कपड़ा उपरे मून रो गोटे कलर रिफ्लेक्ट होची जहा द्वारा मो ड्रेस मून कलर्ड रो देखा जाउची. So, people said Indian children are dumb. They seldom make a reply. Clearly, I hear Dolores answer yes. Sunset is so good. I think God is throwing a bright shovel shoulders of the sky. So, what does this stanza speaks? This stanza speaks that white people have said, white people thare kahithile कि इंडियन चिल्ड्रेन होचंती डम्ब. दे डोंट गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन. से माने केतबेले केमते ही रिप्लाई करंती आ बहुत भाबी चिंती के रिप्लाई करंती. बट Juanita Wells proves them wrong again by giving third example of कौन आंसर देइथिले. डेलोरेस कहिथिले यस सूर्य अस्त बहुत सुंदर देखा जाए. एमिति लागुची कि गॉड जेंती गोटे ब्राइट शॉल घोड़े देइचंती sky ro kandho upare. How much imaginative, how much poetic Dolores is that he imagines the colorful sky, the pink color, orange color sky during the evening to be shawl that God has thrown on the shoulders of the sky. The white people said Indian children don't have affection, they don't have emotion for anyone. But Juanita Wells proves them wrong by giving the example of Ramon. She says that Ramon को माँ जेबे ठारू buried underground ही जेबे ठारू मरी की पोता ही ग्राउंड धीरे ताकू किछि भलो लागुनी ताकू wild feeling आसुची. Okay, white people also said that the Indian children are rude. They don't know how to behave politely, which is wrong. एटी ज्वानिता बेल कौन कहिसंती एटी कुहाई कि व्हाइट पीपल्स माने सबु बेले भाबंती कि तांको भलिया आउ के नहांती. एवरीवन इज डम, एवरीवन इज डल, बट दिस इज नॉट ट्रू. केतबेले डल पीपल्स भी एमितिया इमेजिनेशन करिवे, एते भलो काम करिवे, व्हाइट पीपल्स माइट नॉट नो. So in this stanza, she gives another examples of Joy Henry's remark. The tree is hanging down her head because the sun is staring at her. White people always stare. They do not know. It is not polite. So इस stanza रे कौन कुहाईची? इस stanza रे कुहाईची कि Juanita Bell example देइचंती Joy Henry रो, जे कहिचंती कि ट्रीटा सबले निज मुंड तळकु नुआईकी रही थाए. ता माने एया नुए जे शी माने सी सेल्फ एस्टीम हरई सारी. ता माने एया जे सन ता उपरे सबले स्टेयर करूची. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टैंजा? दिस स्टैंजा मीन्स दैट कि व्हाइट पीपल्स डोंट नो टू बी पोलाइट. दे डोंट नो कि सबु बेले रेड इंडियंस को ऊपर स्टेयर करिया भलो कथा नुहे. For the same reason, red Indians also bow their head because white peoples always continuously stare at them. This last stanza, Juanita Bell says, people said Indian children never take you in. Outside their thoughts, you will always stand. I have forgotten the ideal words the people said. Treasure the day when iron doors swung wide and I slipped into the heart of Indian land. So, जुआनिता बेल ये कौन कही ना व्हाइट पीपल्स आहरी भी बहुत सारा किसी जिनस कही रेड इंडियन चिल्ड्रंस को विषय दैट नेवर बिलीव, नेवर ट्रस्ट देम, दे विल नॉट पुट यू इनसाइड देयर थॉट्स और बहुत सारा किसी. बट दे ऑलवेज टोल्ड इट रॉन्ग वे. सो जुआनिता बेल कौन कही ये आयरन रॉड्स स्वंग वाइड आ माने कौन द इंडियन चिल्ड्रंस आर लाइक द आयरन डोर्स. दे आर वेरी स्ट्रांगली बिल्ट विद इन. सो जिते भी जहाँ तांको किए भी किसी कहीदो दे विल ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. एंड Juanita Wells says in the last line, slipped into the heart of Indian land. Juanita Wells says that she wants to enter the heart of Indian land. She wants to share their soft words. She wants to prove the Indian children speak. So एइथरु आमे कौन जानिया पई पाइलु ए होल पोएट्री रु आमे जानिया पई पाइलु कि Juanita Bell takes the side of red Indian children. She says that they may be backward, they may be uneducated, they may be dirty, or they may wear ragged dresses, but their heart is clearly filled. The heart is filled with divinity, humanity,
tender feelings and they get expressions ମାନେ ତାଙ୍କ କତିରେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ କତିରେ the red Indian children are nobler, higher, greater and the imagination power is completely high than the white people's. She says that the small children are even though more creative than white people's. So that's all for today. Have a nice day ahead. Thank you. Like, share and subscribe.